This year's International Booker Prize went to Tomb of Sand, which is the English translation of a Hindi novel known as Ret Samadhi by Geetanjali Shree. It was translated into English by Daisy Rockwell, an American translator, a well-known American translator. Just now I'm going to read out an extract from the same, both in English and in Hindi, bilingually. I have chosen this particular extract because I'm fascinated by the way Geetanjali Shree makes use of a particular word, Reeboks. The way she uses it as a metaphor, and the way she's able to convey something serious and something deep in a very casual and light-hearted manner, with a tinge of subtle humor. So let me begin with the English one first, from the Tomb of Sand. There are those who say that long ago the Reebok was a poisonous snake that went slithering about the southern portion of the continent known as America. It underwent a transformation when someone wrapped it around his feet in order to jump about with greater agility. And it is said that all the snake's bravado entered the person who wrapped his feet in its skin. But now Reeboks are only known for their current incarnation, and the company brings forth new types of shoes, not snakes, generation after generation. All types of shoes. One has spikes on the bottom, another has holes on top. A third has cushioned soles that bounce like rubber balls. That is, the Reebok species and subspecies have grown stronger with time. They hug the earth with their tentacles and breathe fire, and who now remembers that it originated with a snake? The Reebok clan has grown so large it has beaten the Sikhs, the Gujaratis and the Chinese, all of whom like to boast that they have reached all corners of the world. The Sikhs used to be proud that one of their number had even reached the shores of Iceland, complete with turban, kara and kirpan. But Reeboks have defeated all three, taking the form of not only shoes, but socks, gloves, hats, bags and bras. Is there any form in which they have not manifested their brilliance? Indeed, they have attained the highest pinnacle of achievement in all the following fields: walking, running, yoga and dance. But why make these assertions, one might ask? Why make these assertions, one might ask? There is no straight answer to that. But there is a walking, talking, quivering example of the power of Reeboks in the home in which this tale is set. The home in which this tale is set, namely in the person of the one and only daughter-in-law residing there,
Bahu. Everyone knows that from the day she first donned a pair of Reeboks, she spontaneously began to take long walks all by herself, started taking an interest in jogging with her girlfriends, and began learning yoga under the tutelage of the gurus in the neighborhood park. Started taking an interest just like that? Or did she run towards it? And during holidays, when the neighborhood moms had time off from the demands of their children's schools, this same Bahu became a guru herself and taught popular yoga classes in summer and winter. And lately it has been heard that she is enrolled in salsa dancing classes. And who knows how often the door is startled into wondering, what is this? Ousted Beti entering? A reigning Bahu departing? How are the Reeboks engineering this topsy-turvy situation? It also might have seemed like the daughter felt guilty. She hadn't done her duty and thus had turned about and walked back in, and the daughter-in-law, reassured that she had fulfilled hers perfectly, walked out. But there is no indication that the door or anyone else felt this way. Not yet. Anyway. And now, the Hindi one, the original, by Geetanjali Shree. कहते हैं सबसे पहले रीबॉक एक जहरीला सांप था जो अमेरिका नाम के महाद्वीप के दक्षिणी देशों में लहर बहर फिरता था। फिर उसकी काया पलट हो गई जब किसी ने उसे खेल कूद के लिए पांव पर लपेट लिया और उसकी सारी शेखी उससे निकल उसको लपेटने वाले में जा गई। उसकी सारी शेखी उससे निकल उसको लपेटने वाले में जा गई। अब वह अपने नए रंग रूप में ही जाना जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नई किस्म आगे बढ़ाता है। जूता न कि सांप, जूते का प्रकार, एक के तलवों में कांटे तो दूसरे के तन पर सरंध्र और तीसरे का सोल गद्देदार जो गेंद की तरह कूदे है, यानी उसकी जाति प्रजाति और ताकतवर होती चली है। उसकी जाति प्रजाति और ताकतवर होती चली हैं, पृथ्वी को शिकंजे में कस लेती हैं और जोश जनी से सांसें लेती हैं। और सांप कभी तुर्रे खान था, किसे याद। इतनी बढ़ी है बिरादरी, इतनी बढ़ी है रीबॉक बिरादरी कि सिखों, गुज्जुओं, चीनियों को पछाड़ दिया है, जिनमें बड़ी हाँक थी कि वे विश्व के कोनों में जा पहुंचते हैं। एक खबरिया इसी पर अहंकारी हुए गया था कि आइसलैंड में सरदार जा पहुंचा है, मैं पगड़ी कड़ा कृपान के। मगर रीबॉकों ने इन सब को धता बतला डाला है और जूते तो जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, बस्ते, ब्रेसियर्स की शक्ल सूरत लेकर कहाँ नहीं शान बखारते हैं। इसलिए कि उन्हें महारथ हासिल है इन क्षेत्रों में, पैदल सैर, दौड़, योग और नृत्य। कोई पूछ सकता है कि किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है।
तो उसका सीधा सा जवाब ही नहीं, चलता फिरता फड़कता नमूना है। जिस घर परिवार में ये गाथा स्थित है, वहां की एकमात्र पुत्र वधू। सब जानते हैं कि जिस दिन उसने रीबॉक डांटे, वह खुद ब खुद लंबी लंबी सैर करने लग गई। वह खुद ब खुद लंबी लंबी सैर करने लगी। दूसरे संगी साथियों के साथ जॉगिंग में रम गई और मोहल्ले के बाग में योग गुरु की शागिर्दी में योगासन भी चल निकला ऐसा वैसा कि दौड़ गया। और छुट्टियों में जब बच्चों के स्कूलों की ज़रूरतों से आसपास की माँओं को फुर्सत थी, तो यही पुत्रवधू उनकी योग गुरु हुई और अच्छा खासा समर और विंटर कोर्स कराने लगी। और नया ताज़ा ये सुनने में आ रहा है कि अब सालसा की क्लासेस में दाखिला ले लिया है और न जाने कितनी बार दरवाज़ा चौंक जाता है कि यह क्या, अपदस्थ बेटी घर आती हुई और पदासीन बेटी और पदासीन बहू घर से जाती हुई। ये कौन सी उल्टी गंगा रीबॉक बहाता है? ऐसा भी लग सकता था कि एक को अपराध बोध है कि मैंने नहीं निभाया और इसलिए अब पलट के आती है, और दूसरी को आश्वस्ति है कि मैंने खूब निभाया और इसलिए अब निकल जाती है। पर दरवाजे को या किसी और को ऐसा लगा, इसके कोई चिन्ह पहचान में नहीं आए हैं अभी तक। थैंक यू।